आरपीसी क्रैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टीचिंग मेथड पार्ट फर्स्ट, डायरेक्ट मेथड। सब्जेक्ट इंग्लिश है, मॉडल पेपर है। डायरेक्ट मेथड was originated in France. Direct method comes as an improvement reaction to the demerits of grammar translation method. डायरेक्ट मेथड इज नॉन, डायरेक्ट मेथड के दूसरे जो नाम है वह न्यू मेथड, रिफॉर्म मेथड, नेचुरल मेथड, ओरल मेथड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड? सेंटेंस। डायरेक्ट मेथड फॉरेन लैंग्वेज इज टॉट। डायरेक्ट मेथड फॉरेन लैंग्वेज इज टॉट without use of people language, without translation, without the study of formal grammar. Direct method increase the student capacity to hire accurately. The main advocate of the direct method, Dr. Michael West. The philosophy of a direct method. Learning to speak a language is always shortest road to learning and write it. डायरेक्ट मेथड ग्रामर इज taught indirectly या इनडायरेक्टली पढ़ा जाता है। द बेसिक आइडिया ऑफ डायरेक्ट मेथड, फ्लुएंसी इज ए रीडिंग एंड फैकल्टी इज ए राइटिंग। फ्लुएंसी इन स्पीच। डायरेक्ट मेथड डी emphasize translation and memorization of a conjugation and rules. Foreign language through direct method is taught conversation, discussion, reading the language itself. Emphasis in direct method is laid on applied grammar. Direct method are professionally used in from simple to complex, concrete to abstract, and particular to general. Direct method stress on oral and oral appeal. In direct method, the mother tongue use of a natural environment, which is taught systematically in direct method. Pronunciation. Balti's method is the term used for direct method. Main features of direct method needs a full contextual situation. Sentence in the unit of teaching. Direct bond is created between word and idea, word and experience. Much stress is put on speech. Language is the subject of skill.